Today's Good People, Good Works will be presented in Urdu and English with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Urdu and Thai. आँखों में लाखों है सपने दोस्तों, खड़े जीवन की राहों में वो, चेहरों पे कल की है कोई आरज़ू, नहीं आज की है जुस्तजू। फूलों जैसे फूल है ये भी खिलना चाहते हैं, जिंदगी है जिंदगी को ये भी जीना चाहते हैं। दे देन है जिंदगी, आओ दे देन है जिंदगी, जिंदगी मेहरबान नाजरीन, इस हफ्ते के प्रोग्राम अच्छे लोग अच्छे काम में खुशामदीद। आज हम ज़िंदगी ट्रस्ट पर अपनी प्रेजेंटेशन का पहला हिस्सा पेश करेंगे, जो एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है कराची, पाकिस्तान में। इस ख़ास तंजीम की बुनियाद पाकिस्तान के पॉप गुलकार और इंसान दोस्त शख्स शहजाद रॉय ने डाली, जो पाकिस्तानी बच्चों को अच्छी तालीम मुहैया करने के लिए कोशां हैं। When you visit the streets of Pakistan, the flower sellers, the hawkers, you'll see a light in their eyes. And they just need one opportunity. And I feel proud of the school because after giving them this opportunity, they can achieve, they can do anything in the world. And so all the children in Pakistan really makes me proud. The way they progress. The wider impact of that in our organization, whether it's USA Zindagi Trust or England Zindagi Trust or Pakistan Zindagi Trust, our core group of volunteers, our core group of board members, we're all just volunteers. The idea is to help others while sustaining and upholding those values. शहजाद रॉय पाकिस्तान के खुशगवार साहिली शहर कराची में 1977 में पैदा हुए। उन्होंने अपना इब्तदाई बचपन पाकिस्तान के सूरज के नीचे गुजारा। वो अमरीकी स्कूलों में इस्तेमाल किए जाने वाले तालीमी तरीक़ों से बहुत मुतासिर थे, जो तनकीदी सोच और तख्लीक पर ज़ोर देते हैं। अपने जवान और नरम दिल में शहजाद ने ख़ुद से वादा किया कि एक दिन वो इस तालीमी तर्ज़ को अपने मुल्क में मुतारफ़ करवाएंगे। अपनी तालीम अमेरिका में मुकम्मल करने के बाद शहजाद रॉय अपने मुल्क में वापस आए और अपना जज्बा पूरा किया मौसीकी के लिए 1995 में अपनी पहली एल्बम जारी करते हुए, जिसका नाम ज़िंदगी था। ताहम सिर्फ मौसीकी शहजाद रॉय का मकसद नहीं था। वो बहुत फ़िक्रमंद थे गैर मुराद याफ्ता पाकिस्तानी जवानों के बारे में जो तालीम हासिल नहीं कर रहे थे, जिसकी इन्हें ज़रूरत थी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए। इस बात पर यकीन रखते हुए कि अच्छी तालीम हर शहरी का हक़ है, 2002 में अपने कॉन्सर्ट और मौसीकी को इस्तेमाल करते हुए शहजाद रॉय और उन जैसे कुछ लोगों ने ज़िंदगी ट्रस्ट की बुनियाद रखी। ज़िंदगी is an Urdu word. In English you can translate life, and we think that we are giving a new life to those kids who are doing very laborious menial work with very little remuneration. And if I was to quantify the remuneration, they work for something like maybe $0.25 a day. And therefore they obviously cannot afford to go to school, they cannot afford to buy books, they cannot afford to buy other stationery material. So this model of ours provides an opportunity right outside his house. काम करने वाले बच्चों की स्कूल जाने पर हौसला अफजाई करने के लिए शहजाद रॉय आगे बढ़े एक अलग तसव्वुर के साथ, जिसे मुझे पढ़ने के पैसे दिए जाते हैं कहा जाता है।
जो फ़रोग़ देता है काबिल बर्दाश्त तालीम को मुकामी हलकों में। They're working children and earning member of the families. So I just came up with this idea that if I try to compensate them what they're losing outside, maybe they'll come to school. So this is how I started this program. We started with a daily stipend of ₹20, about $0.25. So if a child attended our school, at the end of the week, per day he got 20 rupees, that is $0.25. After about 5 years or so, when we saw that the children and their parents had started understanding the value of education, we carried out a trial, and in which we talked to the boys, girls and their parents, and we said we are going to now reduce the stipend to half. And we wanted to see the reaction, and we were very pleased to see that there were very negligible number of dropouts. And we continued with that model for another 2-3 years. And we again saw that the enthusiasm of the parents and children was on the increase about coming to schools. When they graduated and did their primary education of 5th level, the parents were very happy. So we carried out yet another experiment, and we went to them and we said, okay, we will now onwards afford your education beyond class 5 in normal schools, not Zindagi Trust schools, but wherever you want to go, and we will pay for the bills, fees, and etc., etc. But you have to forego your 10 rupees stipend. And the reaction was again very overwhelming, and they were more than happy to forego 10 rupees and continue education. Now we have girls and boys who are in class 6 and 7 having graduated from our schools. ज़िंदगी ट्रस्ट प्रोग्राम तालिब इल्मों को बुनियादी तालीम फराहम करता है, शुरू करते हुए किंडरगार्टन से 5वें दर्जे तक। इन्हें अंग्रेज़ी, उर्दू, सोशल स्टडी, इस्लामियात, रियाजी, साइंस और कंप्यूटर पढ़ाते हुए नामज़द ज़िंदगी ट्रस्ट के स्कूलों पर। मुक़द्दस मकसूद, हम एडिशन कर रहे हैं और मैथ में ना बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तालीम देने के पेशावराना और अमली तरीके और इसके साथ साथ बच्चों को स्कूल आने पर वजीफ़ा देना बहुत अच्छा हल है पाकिस्तान के देही इलाकों में तालीम को फ़रोग़ देने का। We have developed a curriculum. That curriculum is need-based and activity-based. We want our children to be a better citizen of Pakistan. Our teaching method is just interactive. We try to build confidence in our students. The good thing which we have incorporated in our curriculum is life skills. How to have a better relationship with their class fellows, courtesy, greetings, and how to speak, how to think critically and just bring a change in their lives. ये इदारा कैसे पहुंचता और पहचानता है ज़रूरतमंद बच्चों तक? We have a field team whose job round the year is to go around in the poor localities and also go around at those workplaces where these small boys are working. This field team of ours keeps identifying and pinpointing the potential kids who would be fit to come to our schools. These field people talk to the kids, they talk to the parents, and they also talk to the employer. We need cooperation from three ends, the kid, and the parents, and the employer. हालिया तौर पर ज़िंदगी ट्रस्ट 2800 से ज़ायद बच्चों की मदद कर रहा है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में तालीम हासिल कर रहे हैं।
At the moment, the school is 3 main stations: Karachi, Lahore, and Rawalpindi. And number of students that have graduated from the system is about 14 to 1500 at this time, and every year it keeps adding. Our schools are not more than about 100 children at a time, and you'll be very pleased to know that we have a very good ratio of girls to boys. Sometimes it is 50-50 and sometimes it is 45-55 in favor of boys. So, and that's a good part of these schools. ज़िंदगी प्रोग्राम ना सिर्फ इसमें शामिल लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली लाया है, बल्कि एक मुस्बत और बेग़र्ज़ रवैया पैदा किया है उन बच्चों के दिलों में जिन्हें मदद मिली है। And the parents said that we will work extra hours to generate $50, but we want our children to go to school. And another very good indication was that these children, when they came to school, they also made sure that they brought their siblings along later. So we have many such cases where more than 2-3 children from the same family come and attend our schools. Mudassam, he says, when I grow up, I want to be a teacher because I want to help other kids like me. And he adds humorously, I also want to be a singer like Mr. Shehzad Roy. There's a little girl, she has congenital heart disease, so she has a hole in her heart, which we're trying to get surgery for. She wants to become a doctor and help other girls like her. So, we're giving these kids more role models. We're not just giving them the idea that, yes, you get an education and then you go back. We're telling them you can progress, live your dreams, get inspired by the role models that you now see, and become teachers, doctors, lawyers, engineers, not just be stuck in that circuit of child labor. Our children now are thinking how to take care of themselves, how to take care of their family with the hygiene and the cleanliness, which we want to make our children think that this world is yours as well. इसके अलावा ज़िंदगी ट्रस्ट ने मदद की है सरकारी स्कूलों की तामीर नौ में और बेहतर बनाया निसाब को और पाकिस्तानी निज़ाम तालीम की किताबों को ताकि ज़्यादातर आबादी इससे फ़ायदा उठा सके। In 2006, I took over a government school and I turned around that government school. I don't know what good education is. Obviously, it will change every year, every 10 years. It's about human, it's about nature, it's about loving your fellow beings, it's about loving the nature. And if the education is not, pushing you to become a good human being, then it's of no use. So being a good human is respect and feel for others. I think this is what schools should focus on. जनाब शहजाद रॉय, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और सराहते हैं आपकी रहमदिली और बेगर्जी को। दुआ है कि आपका नेक मकसद जारी रहे दूसरों की मदद करने में और पाकिस्तान के बच्चों का रोशन मुस्तकबिल तामीर करने में। जिंदगी आस बन जाए, प्यार की प्यास बन जाए, जिंदगी आस बन जाए, प्यार की प्यास बन जाए। ये दुआ मांगे रब से, हम खुशी बांटें सबसे। अब जिंदगी दुख दर्द का एहसास बन जाए, जिंदगी आस बन जाए, प्यार की प्यास बन जाए, जिंदगी आस बन जाए, प्यार की प्यास बन जाए। ये दुआ मांगे रब से, हम खुशी बांटें सबसे। अब जिंदगी दुख दर्द का एहसास बन जाए, जिंदगी आस बन जाए, प्यार की प्यास बन जाए। शहजाद रॉय और ज़िंदगी ट्रस्ट के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखिए www.shehzad-roy.com और www.zindagitrust.org। पुरजोश नाज़रीन,
आज के प्रोग्राम अच्छे लोग अच्छे काम में आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस मुसर्रत थी। अगले इतवार को हमारे साथ शामिल हों इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के लिए, जिसमें हम फातिमा गवर्नमेंट स्कूल कराची जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह वो तब्दील हुआ ज़िंदगी ट्रस्ट की बेपनाह मेहनत के नतीजे में। आगे आ रहा है प्रोग्राम हमारे गिर्द की दुनिया, काबिल गौर ख़बरों के फ़ौरन बाद। दुआ है कि आपका दिल खुदा की मोहब्बत से लबरेज हो जाए। Spirited viewers, it has been a pleasure having you with us on Good People Good Works. Please tune in next Sunday for the second part as we visit the Fatima Girls Government School, Karachi, Pakistan, and learn more about how it was transformed under the dedicating effort of the Zindagi Trust. Coming up next is the word around us after noteworthy news. May your heart be replenished with the currents of divine love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/GPGW.